and we are a people uh, who have gone all over the world and made it to the top. Today, if you look at CEOs of so many multinational change-making companies, be it Google, be it Microsoft, recently at Twitter also, the CEOs are Indian: Sundar Pichai, Satya Nadella, Indira Nooyi. So undoubtedly, as Indians, we have it in us. We go to foreign universities, we get Nobel Prizes. But there was something lacking in our higher education system here, because of which an Indian working in an Indian university could never get a Nobel Prize. There was something lacking in the higher education system here, that we have a very, very massive gross enrollment ratio, but we are not able to make it to the top 100 of the world class universities. So, keeping all that in mind, this policy has proposed several reforms in the area of multidisciplinarity and holistic education, student diversity and inclusivity, ICT, which is the buzzword today, which is destined to change everything, every small and mundane thing, even how wedding rituals are performed these days is influenced by ICT. I mean, far off guests can participate in the wedding virtually using the metaverse from Facebook. AI is there, which can digitalize everything. How we appreciate art, how we appreciate literature, how we keep healthy. We are all wearing some device or the other, which is giving big data to keep ourselves healthy. So it was high time that higher education also reforms itself according to the new age technologies and according to the new objectives of India. So there is indigenous knowledge system that we will be looking at. There will be ICT, as I said. We are going to look at the role of higher education in society. And for all this, I am so fortunate. I feel so fortunate that I have Professor Sajid Jamal Saab. He is the coordinator of your course, and he has been the coordinator of all the national education policy orientation and sensitization programs that the UGC HRDC AMU has held till now. Very soon we will be the Malviya Mission Teacher Training Centers. Name might change, but my team will not change. Professor Sajid Jamal and his group of resource persons, and I must say, and I say this every time, it is honestly a tribute to his leadership and to his networking, that in his band of resource persons, the width is very, very broad. His range is very, very wide, I should say. You will be having very senior retired vice chancellors. You will be having very senior retired higher education leaders, but at the same time, you will also be having an opportunity to listen to young, budding, brilliant assistant professors and associate professors from the Department of Education, who are all experts and who are ready to adopt to the new. So I congratulate you all that you have come on this platform, that you want to learn about the national education policy, that you will be here with us for another 8 days, 16 sessions. I know this is an afternoon course. You are not on leave. You have not been relieved. It must be challenging. It's not easy. We are running it. We know it's not easy. We have to be here up and about up to sunset, even after sunset. And in the meanwhile, in your course, Ramzan will also be setting in. So given all that, I think you should all be congratulated for your commitment to teaching learning, for your commitment to continuous professional development, and for your commitment to implement the national education policy. I will very quickly share with you some guidelines for the decorum of the course. One is, do join the classes on time. This is a 100% compulsory education class. If possible, do keep your videos on. Keep yourself logged in at all times. Do listen carefully to what the resource persons are saying, but do not keep your audio on unless and until you have to say something. If you have to say something, you will have to raise your hand, and seeing your hands raised,
Just like for now, Anuj Punia Sahab has raised his hand. So when it is deemed proper, the resource person will give you time to speak, and only then you can unmute yourself. So that is one. Another is that you don't have to present your screen at any point of time during the entire course. This is only the resource person's prerogative. So don't think that because you have to be present, then you should press the present now button and go. Because in that case, we will have to remove you from the class. At the end, there will be a short MCQ. Please let me tell you, only those participants get a certificate who complete their MCQ. Those participants who do not complete their MCQ on the same day, they will not get the certificate. Later, if you return to us, you want to do the MCQ and get your certificate, please contact the office. Please write an email to me. We will make a new paper for you, and then you will have to appear for that new paper, and only then you will get your certificate. Thank you so much for coming to the UGC HRDC AMU. Thank you so much for coming to the AMU. Actually, I take this opportunity for Professor Sajid and for myself to represent this university of high repute, high ranking, high reputation, not only across the country but across the globe. This is more than a 100-year-old university. Very soon, if we go by the date of the establishment of the college, which was the mother institution for this university, then very shortly we will be touching our sesquicentennial year in 2025. Not many institutions in the country have this distinction. The AMU has maintained this over this long period of time, and this course, with the cooperation and with the participation of you all, is certainly a very small, but I must say, another positive progressive step towards keeping the reputation, the ranking, and the importance of this institution at a certain level where it has been maintained. Thank you so much. I will see you. I will keep seeing you. I'm very glad you are in extremely able hands with Professor Sajid Jamal, our entire technical team, Mr. Mazhar Haider Zaidi, and our office staff is there for you for anything. I wish you a very happy, a very pleasant, and a very gentle learning experience. When I see you at the other end of the course, I believe that you all would have grown, you all would have learned, and you all would have progressed towards MEP. Thank you so much. Uh, Thank you, ma'am. I think our resource person, Asiya Choudhry, ma'am, has joined. So everything has been very explicitly explained by our director, ma'am. So my friends, I will be in touch with you definitely after every session or introducing some resource person of the session. Definitely I'll be in touch with you. So at this juncture of time, I take the opportunity to introduce our today's resource person, Professor Asiya Choudhry, ma'am. And let me tell you, ma'am never wants a lengthy introduction. So just one or two line, definitely I'll be introducing her. She is a professor in the Department of Commerce, and her peculiarity is that she has mastery over entrepreneurship development. So one session we have deliberately kept in this workshop, that is the training for entrepreneurship. Since she has a lot of exposure and she has done a lot of programs related to entrepreneurship development. So I think she is the most suitable person to do the needful. So her complete CV is available on the web page of the department. Definitely, if you want to see it, you can see. One thing that I would like to say, ma'am was very hectically engaged since last 1 month. She is provost of one hall of residence, and running a hostel in big universities like AMU is really very difficult. She would have been woken up, I think, by 2 or 3 a.m. But still, I mean, she has honored our request to deliver the lecture today. So with this short introduction, I'm handing over the session to Asiya, ma'am. I'm quite sure you will like her session. Ma'am, it's over to you. Thank you so much, Professor Sajid Saab and Dr. Faiza, for allowing me on this, giving me an opportunity to talk to the really bright participants every time you have, and the large numbers that you always host to. Thank you for introducing me to them. Carry on. So, okay, thank you so much. So, coming to
my session, and I just take up that today I'm going to begin with, I hope you all, this is your first session and you all are full of energy and full of excitement, that what is there in Sorry, this ma'am. total May I ask program. you a question? Yes, please. Yes, please. So, is it equivalent to FDP? Is it equivalent? What is equivalent to FDP? Asiya, let me answer. Okay, okay, yes, please. रामेन साहब, ये सवाल आप बेहतर होगा कि फोन करके हमसे करें, लेकिन चूंकि आपने करा है, मैं आपको बता दूं, ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स के इक्विवेलेंट है। ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, ये 8 दिन का, और इसमें आपको, अगर आप ऐसे 2 कोर्सेज करेंगे तो वो एक रिफ्रेशर कोर्स के बराबर होगा। So let us now concentrate on the subject of the resource person. Okay. Okay. Okay, so to begin with at the starting of the program, you're starting with something very fresh and I think very more emphasized issue that has been introduced in the new education policy, that is on entrepreneurship, and how that what are the conditions in the country these days that the government is focusing so much on, and emphasizing that we, even at the university level, we must be teaching and we must be training the students to become entrepreneur, how important it is. So let us just have, I'll be sharing my PPT here, that is on which we will be having some discussion. I hope this is visible. Yes, please. Is it visible? Yes, No, ma'am. ma'am. Yes, No, ma'am. It is visible. no. I think it's there now. Yes, ma'am. It is visible. Uh, Okay, so we are going to talk on the very burning issue that is going on these days in the country itself, that more and more emphasis is on entrepreneurs and entrepreneurship. Maybe there are so many reasons behind it. And now it is the high time that we come out of, looking for employment, looking for job all the time, and training our kids and students, to look for a good job. And you study in such a way, what we do as parents as well as teachers, we are always pushing them that you get good grades so that you can qualify some competition, or maybe you go for some excellent job. It's very rare that we motivate our candidates or our students towards entrepreneurship. But this step, a very bold step, has been taken by the government. That is, more and more emphasis should be in such a way, in maybe on via vocational training, maybe via entrepreneurship, that students opt their career as to become an entrepreneur in future. So first, let us understand the concept that what is an entrepreneurship. Why do we say that it is so important these days? So coming to explaining the term entrepreneurship, is uh, looking for, or maybe thinking of taking care of, or maybe looking around and finding some problem around you and then trying to work upon that. Just a minute, please. That is when an entrepreneur is a person who, when he looks around and he finds certain problem, or he can identify certain gaps, maybe on the basis of the need of the people, the requirement of the people, he tries to find a solution to that problem. That is maybe either by producing a good or maybe producing a service. He brings a solution for the people to the existing problem. So it is, an entrepreneur is a person who brings all the factors of production together. First, he identifies the problem. He identifies that what is lacking, what should be there. So he tries to, identify that problem, and then he finds a solution to that existing situation. And then accordingly, he gathers all the factors of production. Factors of production might include: the land, the labor, the raw material, the technology, the, maybe the, 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 the,
maybe methodology of doing and of producing that goods and goods and service, maybe establishing a factory side, a production side, or maybe an office, etc., etc. So he makes all the efforts, he takes all the initiatives in order to produce a good or service for the consumers, for the people, the good that might he can sell it for in return for a profit, and maybe to sustain, because he also needs money to sustain himself, because he himself is one of the factor of production. And then that product comes into the market with innovative and creative ideas, with maybe we can say with in the shape of any kind of product or service that we have. So entrepreneurship is an art, or maybe we can also call it a science. We will understand it how, that to bring to create employment, to generate employment. So this entrepreneurship is becoming more and more important, that there should be more people who come up. For example, we have well established strong entrepreneurs, for example the Tata Group, the Reliance Group, and so many, there are thousands of examples. So let us see that how these entrepreneurs, they contribute to develop or progress an economy. First of all, they generate very creative ideas. They are actually creative people, because what to produce, it is not an easy decision, and it is without technical knowledge, without an expertise in manufacturing a good or service, it's not easy. So that person who have decided to become an entrepreneur, he is always full of creative ideas, and he generates or maybe transform those creative ideas into actual product or services, in order to cater to the society, cater to the people, and maybe fulfill their needs and requirements. And by doing so, they generate direct and indirect employment. Direct and indirect employment here means that maybe he hire people directly, and suppose he's purchasing raw material, he's purchasing other resources in order to establish that his factory or something like that. So wherever he is purchasing things, there they are also manufacturing in their own sites. So they are also there. Also, we are indirectly creating or helping them to create employment. They are, they bring in all the expertise, all the professional. An entrepreneur, he's bringing the raw material, he's bringing the technology, he's bringing in all the experts, all the people who are professionals, or maybe they are potentially very strong, but they lack the initiative of bringing all the resources together. Then this fellow is bringing the entrepreneurs, the experts, the potential people together to work on, to brainstorm and to work on and create something new. And in this way, he is promoting capital investments in the country, more liquidity flow into the country, and through these business, the money is distributed to all over, to all the factors of production. So this way we see that he is helping in economic development, he is helping in generating employment, he is contributing in improving the standard of living of people. Because if they are not innovative and they are not creative, they do not come up with better ideas to make our life comfortable, it is the entrepreneur who provides us with that. So we find that they go with lots of job opportunities, they produce, they help in distribution of wealth and maybe creation of further wealth also. He helps in improving the standard of living of the people, and then of course it leads to the overall improvement or growth in the GDP, leading to overall economic development. So we find that there are so many benefits, from entrepreneurship, and therefore, the government is these days, they are. I think somebody has switched on their mic, so please switch on. Yes, I think this Mr. Wasim Raja, please pick the mic up.
Mr. Wasim Raja, can you please just put off your mic? Okay. So we find that even the government is, therefore, they want more people to create employment. And at present, we find that there is a situation that there is a lot of unemployment existing in the country. And therefore, we need more job givers. We don't need more of job seekers. We need more of job givers. That is those segment who can employ more and more people. And they also want that these brains who are in search for job, they leave the country looking for work, they move out to other countries, they want to retain back. They want that India should be holding them back together in order to have them in the country itself, that is the productive force. So let us first, just to understand, make you understand, I'm just sharing few data that why is it becoming more important to focus on creating or producing the job givers, that is the entrepreneurs. So we see that India today, it stands with the biggest population in the world, with very astounding data that 65% of the Indians, they being the dynamic young population under the age of 35. And why do we call these, people, this young 65%, that is a dynamic young population? Because I hope you all will be agreeing with me that because youth is the most energetic and most productive section of any society. It may be India or anywhere else. So a country's ability and potential for growth, and they are determined by the size and strength of its youth population. So this vast resource of young citizens entering the workforce has created a demographic dividend, which means that economic growth resulting from a population's age structure shift. If a country which is overloaded with old population, if it has more percentage of population who are old and retired, they are the dependent workforce on others. Then it becomes very difficult, because then you have more hands to serve, more mouths to serve, rather than more hands to work. So in India, for example, China is a good example we can quote here, that they have more, that there is a structural shift towards the old and retirees people, which are more burden to the economy. And since they had, previously they had one child policy, or maybe encouraging no children at all, because the ones they had, they were overpopulated. But that has, disturbed the whole age structure and their demographic dividend, what we call. So, in India, but we are blessed here these days, presently, with a 65% people around 35 years of age. So it calls for an economic trigger when a country has more hands available to work than more mouths to feed. So today's young generation, they are tomorrow's, because they are tomorrow's innovators, creators, builders, and leaders. They will be the force who will be managing the economy together. What Some data I just want to share with you, that is the unemployment level was as high as 28.26% in 2021, in comparison to 23% in 2018. Although India witnessed substantial expansion in higher education, in spite of that, the higher education sector expanded. It was from 38.5 billion students studying in 1920, in comparison to 29.2 million students, in 2011-12. So we see there was a general ratio improved by 7.9%. In spite of this improvement in higher education sector, the unemployment rate has increased a lot. And there was a recent document by FICCI, which I would like to share with you. The report summarizes that the higher education may be as follows. They say that although India's
higher education system contributes about 350,000 engineers and 2.5 million university graduates annually. But we find that 5 million graduates, they remain unemployed most of the time. And a large amount of literature has also analyzed that there is a mismatch between the job and education at macro level. Because as over education, maybe we can say, when the supply of educated force, they are much more than what is demanded in the labor market. Leading to wage reduction, leading to exploitation of people who are so well educated. So that is, this data supports that in spite of a rise in higher education sector, we have a higher unemployment rate. So it is very, difficult that how to manage this situation. So let us first understand that what is this mismatch existing in India? What is the very typical, specific kind of mismatches are there, which we can understand under these 1, 2, 3 type. Type 1 is over education. At the individual level, over education is defined as a form of skill gap, wherein overqualified persons with tertiary education, they are hired for job or activities that do not require such qualifications. Because of the oversupply of persons for such jobs, higher education is used as a transparent and easy screening, I think, and you all understand that too. It is taken as a very easy screening device by employers. Maybe I can say that if maybe we see so many, for example, a postgraduate in economics, he is hired as a bus driver. There are so many graduates who are just driving auto rickshaw. So they are overqualified, but they do not get appropriate job, and therefore for living they have to do something, so they go for it. So there is, I think, over education than what is required, and obviously those who cannot get the jobs, they have to set themselves somewhere or the other. Second type is the skill mismatch in technical education. This is, it is specifically, we can say, where people who have received the higher education in technical fields, such as maybe agriculture, engineering, and technology, and they end up in working, end up working in jobs that do not require that training. For example, maybe an agricultural scientist, he is appointed as the director of a firm. Now he has been educated as an agricultural scientist, but he's doing some different nature of job altogether, for which he was not trained at all. So such a skill mismatch is when a person hired qualifies differently from the requirement for that particular job. And third is quality skill gap. The third form is that it is when the firms they're hiring for a job that requires people with tertiary education. They complain that the quality skill is inadequate for such activities. As a consequences, while persons with higher education, they get hired for such job for which they required maybe significant training, and therefore they add to the cost of the firm. For example, maybe we can say a graduate in commerce, he should be first trained in the firms, maybe for accounting procedure, because if he is just graduate in commerce, he is not an expert in accounting, so the company will have to train him in the accounting procedure. And therefore, we can see that there is a poor quality of the existing higher education system. So maybe we can say, I'm not blaming the system, but I can say there is fault we can now visualize in the higher education that needs lots of correction, lots of improvement. But one thing I hope you all will be agreeing, that these days when we talk about placement, what I find with my students when they are going around and looking for placement, क्या होता है कि
जो कंपनीज है, पहले ये होता था कि हाँ भाई आइए और 6 महीने तक के आप फ्रेश हैं, आप इंटर्न है की तरह काम करेंगे, आपको हम सिखाएंगे और 6 महीने के बाद फिर हम आपको प्रॉपर काम पे लगा स्टार्ट करा देंगे, ठीक है. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी फाइंड, any company who is calling you for hiring, they first call you what is your experience, what are your internship, because they don't want to waste that 6 months salary on training you. They want trained people. तो अब ये काफी ट्रेंड हो गया. 99% कंपनीज अब ये मांगती हैं कि आपने कोई इंटर्नशिप करा, कोई आपने जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहीं थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशंस करे, समर ट्रेनिंग करी, and all those who have done the things practically already somewhere or the other, they get the job immediately. They get the job immediately, whereas they don't, because अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम 6 महीने आपको ट्रेन करने में आप अपनी तनख्वाह क्यों वेस्ट करें. हमें ट्रेन कराया बंदा मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी या आउटपुट जो है वो मेरा कंपनी का ज्यादा आएगा. So the share of so this is the actual problem that we are seeing, and therefore we find that employment rate, it has fallen down, but at the same time एक और बहुत ही unique सा feature हमारे क्या है चल रहा है, that is jobless growth. Jobless growth, and it is, it is growing at a rate more than 7%. So we can say that, we find that 70% of the workforce is still engaged in informal. लेकिन jobless growth को पहले मैं बताती हूँ आपको. Jobless growth क्या होता है? That is, they are looking for a job. जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा मास कॉम कर लिया, जर्नलिज्म में ढूंढ रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है, उन्हीं ने फिर अपना चला, they go for maybe freelancing. An artist who is, maybe he has done PhD in arts and maybe fine arts and everything, now he's not getting a job. He does not know what to do with his qualification, so he starts his own freelancing and he starts doing painting here and there, and whatever little money he earns, YouTube channel banaya, उसमें जो भी मिलता है, तो ये this is called jobless growth. This is getting very prominent because there is a scarcity of job opportunities. So what we find that we can say that 70% of the workforce who is still engaged in the informal and maybe unorganized sector, ये भी एक सच्चाई है, हकीकत है हमारी इकोनॉमी में, that most of the people are in unorganized sector, including, self-employment and micro and small medium enterprises, which do not provide a very stable or assured platform. So in spite of so many, variety of initiative that the government has taken, for example, so many initiative for skill development, specifically, for example, Skill India Mission, National Skill Development Mission, Pradhan Mantri College, Kaushal Vikas Yojana, etc. The youth employment is still persisting to a very, very large extent. So what we see that the problem is so huge, it is so big. Now we can say that it cannot be overlooked, it cannot be ignored. A big question arises on the quality and pedagogy of our primary and higher education system, because I think the problem can be identified there itself, that is from a schooling level to the higher level. There is a system why the people are not understanding, and why the system is not understanding that there is some problem why people cannot get sustained employment. So, and the quality of technical and vocational education and maybe training infrastructure that is also available. So the general education system is still too focused, because they are too focused on grades and careers instead of being oriented towards innovation and entrepreneurship. So, realizing these things, we see that we can say maybe further to discuss further on the same issue. I will say that while investment in human capital are very critical to realizing the sustained economic growth, higher technical and vocational skills, they can improve the competitiveness of economies, and they can contribute to social inclusion, productivity, decent employment for all, and poverty reduction.
So the skill deficit in India requires a policy. Let me talk about the solutions. That what can be the solutions, because uh, maybe it's very simple and easy. You will say कि बहुत आसान है कमियां निकालना, कि इस सिस्टम को कैसे फिर चेंज किया जाए, कैसे क्या एजुकेशन सिस्टम जो इतने सालों से, मतलब आई थिंक अगर इफ यू हैव द नॉलेज दैट जो ब्रिटिशर्स ने हमारा जो ले डाउन करा था स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम का, वो आज तक चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो है थोड़ा सा चेंज लाने की, बदलाव लाने की कोशिश करी गई है, जिसके रिजल्ट लेकिन अभी 3-4 साल बाद पता चलेंगे, जब एक बैच हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पास होके निकलेगा और फील्ड में एस्टैब्लिश होने की कोशिश करेगा। बट अभी तक जो है वी हैव बीन just working on blindly on whatever the Britishers laid down for us, वही करिकुलम चल रहा था। करिकुलम में चेंजेस आए थे, इम्प्रूवमेंट आए थे, बट पैटर्न वही चल रहा था। दैट इज यू जस्ट लर्न अप, एंड अभी भी है लर्न अप एंड यू जस्ट गिव योर एग्जाम। सो I just call it the system as copy pasters. We are learning it, we are not leaving our creativity free, we are not trying to understand the situation. We are just mugging up, and then we are just pouring it out in our exams and getting the good grades. And that is, the parameter to check us, to judge us. So what I feel, I have come up with some of the solutions to these problems, maybe to discuss with you. The skill deficit in India, it requires a policy and institutional framework that is based on a partnership between the government, industry, providers of education and training services, that is the education system altogether, and the civil society. See, I have included a large number of groups. That is, it is not only the responsibility of the government, it is the responsibility of the industry, the education industry, and the civil society. Means we as parents, we as teachers, we also have some responsibility. We will have to come together to change the thing, to and adopt the changes, and adopt those changes. We have to take some bold decisions at this time. Actually, see what happens, that at the youth, that as you all are from higher education, you are teaching the young blood, the young generation of the country. Now, when you're counseling them, when you're talking to them, we have to talk to them in such a way so that they also have the option for entrepreneurship, as well as along with maybe the job opportunities. So because it all goes hand in hand. So no doubt a step has been taken, because universities and colleges, they are the threshold for them, and therefore at university level, bold steps have to be taken up, and therefore so many steps have already been taken by the government to be implemented at colleges and university level. But I think what is more important is the earnest execution and implementation of those फ्रेम पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसी तो बहुत बनती रहती है, लेकिन उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Next is that maybe I think it becomes very important to blend the theoretical and conceptual knowledge. Blending the theoretical and conceptual knowledge means that along with the education, learning and mugging and giving out exams, there should be focus or emphasis on compulsory field research work or maybe project work. Ye hote hain. There should be more, towards training and internship, which should become a part of their credit scores. स्कोर्स जब स्टूडेंट डिग्री हासिल करने चलता है, और ये होते भी है, लेकिन कितना एग्जीक्यूशन पार्ट इसका कितना अर्नेस्टली किया जाता है, हमें आपको सब पता है. बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, वो अपने जान पहचान के लोगों के यहाँ जाके थोड़े दिन बैठ के आ जाते हैं, एंड दे गिव यू द रिपोर्ट की ट्रेनिंग रिपोर्ट हो गई भाई. इसी तरह से प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप फला जगह जाके कुछ दिन काम करके आइए, फील्ड में उतरिए. वो कहीं से भी उस चीज को तैयार करा के ले आते हैं और उसके बाद जमा कर देते हैं. एवरीथिंग मतलब मैं सबको तो नहीं कहूंगी, बट मे बी आई थिंक 50 to 60% इसी तरह से काम चल रहा है. सो एक्चुअली क्या होता है, जब ये काम हो रहा है तो किताबी कार्रवाई तो पूरी हो रही है, कागजी कार्रवाई तो पूरी हो रही है, लेकिन
practically that student is not learning anything, he is not getting any, you know. और इसमें कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स भी जिम्मेदार हैं और उनके साथ साथ उनके स्टूडेंट्स भी, sorry, parents भी जिम्मेदार हैं. The reason is that they always, you know, keep the student in a comfort zone, they keep their child in a comfort zone कि कोई बात नहीं, हम ये अरेंजमेंट करा देंगे, वहां चले जाना, वहां पे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो वो प्रैक्टिकल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. Here, you know, I share with you a few examples what is happening in developed nations, in developed countries. Maybe one of the example is Ecole. It is a very famous university in Switzerland, Ecole Hotelier de Lausanne. Switzerland में established a world leading, you know, hospitality management university. What is happening that when the students come to study there, तो उनके क्या last semester में जो है वो students के लिए project report या project वो बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है. वो student project बनाते हैं और project के साथ साथ एक option ये भी दिया जाता है कि if they want to go for a startup, they want to start their own, you know, business with whatever product they have developed. So, and if they opt for that, to go for a startup, then the university provides them the backup of maybe the banking sector, उनकी मदद कराती है. Then they say that the backup from the marketing, the backup from the production sites, all those things. So इस तरह से ये लोग इन बच्चों की मदद करते हैं. उनको मीन्स एक तरह से जिसको हमें कहना चाहिए इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो ये जब वहाँ मार्केट में नए नए उतरते हैं तो उनको मार्केटिंग की हेल्प मिलती है, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प मिलती है, बैंकिंग की हेल्प मिलती है. उनको प्रोडक्ट पे फोकस करना होता है कि प्रोडक्ट को बना के, एंड वंस दे लॉन्च द प्रोडक्ट एंड दे स्टार्ट सेलिंग इट, इस पूरी एक्टिविटी पे दे आर मार्क्ड. उनको क्रेडिट मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं उस पे उनको, और उसके बाद मार्क्स मिलते हैं, वो उनकी डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चों का कारोबार भी शुरू हो जाता है. एंड इट वाज फाउंड दैट, यू नो, दिस इज कॉल्ड द डुअल एजुकेशन अप्रोच. डुअल एजुकेशन, दैट इज कंबाइनिंग द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल लर्निंग, which you know, it results in very high youth employment rates. उसमें एक ऑप्शन वो नहीं रहता है कि पता नहीं अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, क्योंकि उनको दोनों ऑप्शन दिया गया है. नौकरी नहीं मिली तो आप अपना काम भी कर सकते हैं इस तरह से. सो दे, यू नो, वी ऑल्सो, तो ये एक सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करती हूँ कि why shouldn't this kind of thing be made compulsory in our country, in our place, so that we can you know, promote more entrepreneurship or train more people to be good entrepreneurs in a way. Okay, just excuse me for a minute because I need to put my laptop on charging. Just a minute, please. Sorry for the interruption and thanks for your patience. I'm so sorry, actually I had to plug it. So this can be another alternative if it is made compulsory, and students are also given an option that instead of campus placement, focusing on campus placement only, we can go for a startup idea also. And so many universities in Russia, in Europe, they have already adopted these models in order to make them self-sustained. Then another solution can be, you know, the blending of theoretical and conceptual knowledge, also calls, you know, for teaching the subject practically.
especially in social science. We need lots of vision in that. For example, I went to US, and in one of the University of Houston, there was there's a course running that is entrepreneurship, and this paper is taught in a very, very interesting way. That is, those students who opt for the paper entrepreneurship, they are given some new entrepreneurs, some new people who want to become an entrepreneur, and these students are asked to help them to start their business. इन बच्चों से बोला जाता है आप इन लोगों को कारोबार शुरू करने में हेल्प करिए, वो उनको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लीगल पेपर उनके तैयार कराते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कराते हैं, अगर लोन की जरूरत होती है तो उनको बैंक ले जाते हैं. See how practically they are learning, and by the time they complete their semester, उनको जो जिसने कारोबार जिसका इन्हीं स्टार्ट कराया वो इनकी रिपोर्ट बना के देता है, और उस रिपोर्ट पे प्लस ये बच्चे अपनी लर्निंग की रिपोर्ट देते हैं, वो दोनों की रिपोर्ट कंबाइन करके उनको मार्किंग होती है, उनको स्कोर्स दिए जाते हैं. सो सी दिस इज सच, आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग because एक स्टूडेंट जो है this way the student, they are helped to use their theoretical learnings, they are transformed into practical learning, experiential learning, and they are also transforming their learnings to help the people to establish their business, और इसी बहाने कुछ business establish हो जाते हैं इसी के जरिए. So this is also can be an option, that more and more creativity is introduced in teaching the paper, in learning, in making people learn the paper. और टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा इसके लिए कि आप इस पेपर को कैसे पढ़ाएं, आप इस पेपर को कैसे, और इसी तरह से वहां पे जैसे अकाउंट्स का पेपर है, so there I find that no doubt they are recommended the books, they are taught, but then they are sent to different companies, different firms, different offices, that you just check out their books of accounts and just do their accounting for a week, and then you come back and then just tell me what you have learned, or उसमें practical में आपका क्या फर्क रहा और आपने क्या सीखा. So this way we can blend the theoretical and conceptual knowledge of people. ये है. और दूसरी चीज एक और सजेशन है मेरा, दैट इज द CSR mandate. It has it must be more liberal for an appropriation of an entrepreneurial skill development workshop and university programs, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह से होते हैं और कराए जाते हैं, लेकिन फंड्स की क्राइसिस की वजह से जो है वो प्रोग्राम नहीं पूरी तरह से करा पाते हैं, और गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ लेती रहेगी तो कितना फंड अवेल कराएगी. सो मे बी इफ CSR जो कंपनी के आपके होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है, उसको लिबरल करके यूनिवर्सिटीज को देने के लिए भी आई थिंक प्रमोट किया जा सकता है, सो दैट मोर ऑफ सच एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी सिस्टम. So this is what I just wanted to share with you कि actual में problem है क्या, और actual में उसका solution क्या होना चाहिए, ये कुछ solution मैंने आपको बताए. So coming back to entrepreneurship, that no doubt now we understand that yes, this is happening, and why is it तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सॉफ्ट स्किल है या साइंस है या आर्ट है, ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. व्हाट आई विल से दैट मे बी इट इज अ साइंस. यस, ऑफ कोर्स इट इज अ साइंस, बिकॉज यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टेन सीक्वेंसेस जो कि जरूरी होते हैं कारोबार को इस्टेब्लिश करने में और उसको फिर चलाने में, उसके बाद फिर प्रॉफिट्स कमाने में. बट देन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन दैट how much soft skill he has. उसके साथ साथ उसके अंदर और सलाहियत क्या है कि वो उसी काम को और अच्छे से कर ले. That is the soft skill. So entrepreneurship is at the same time a soft skill also, and therefore can universities and can colleges, or maybe can they be trained to be an entrepreneur? Yes, if they have the potential, if they have the potential to produce a product or service, तो फिर आप उनको entrepreneurship के लिए आप उनको train कर सकते हैं through developing or inculcating in them the soft skills. और अगर ये कराया जाए, अगर ये चीज कराई जाए कि कारोबार कोई भी शुरू कर दे, कि बहुत सारे बैंक में आप देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्कस करती हूँ,
बैंक में लोग लोन लेते हैं कारोबार करने के लिए, और लोन लेने के बाद उनके कारोबार फेल हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद या कुछ दिनों के बाद। उसको जिसको हम बोलते हैं, और वो बैंक का कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं। जो ये कर्जा वापस नहीं कर पाते, इनको बोलते हैं एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एंड व्हाट इज दिस नॉन परफॉर्मिंग असेट? जो पैसा बैंक को वापस नहीं, क्योंकि बैंक के लिए असेट क्या है? उनका जो कैश है जो वो लोन देते हैं, ठीक है, वो वापस नहीं आता है, वो फेल हो जाता है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। और इस वजह से बहुत सारे बैंक्स लॉस में भी होते हैं। बट आई थिंक अगेन देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस, कि अगर जो लोग, क्योंकि वो कारोबार किस बेसिस पे करना चाहते हैं वो लोग, उनको क्यों कॉन्फिडेंस है कि वो कारोबार बहुत अच्छा कर लेंगे? उनको कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि कारोबार करने के लिए जो प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत होती है वो उनके पास होता है, ठीक है। देखिए, दो अलग चीजें हैं, लेट अस मेक इट क्लियर। कारोबार, प्रोडक्ट को बनाना या सर्विस को प्रोड्यूस करना इज वन थिंग। उसके लिए आपको टैलेंट चाहिए, आपको टेक्निकल लर्निंग चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप सपोज ड्रेसेस बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप टेलरिंग का कोर्स करते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग करते हैं, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज दैट आपको ये सब आने के बाद भी आपको इसको कारोबार या बिजनेस फॉर्म में कैसे करना है, वो सलाहियत आपके अंदर है कि नहीं, जिसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, सॉफ्ट स्किल ऑफ डूइंग अ बिजनेस, सॉफ्ट स्किल ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। दैट इज, डू यू पोजेस दोस क्वालिटी और नॉट? दैट इज कि फॉर एग्जाम्पल, कारोबार को इस्टेब्लिश कैसे करा जाए। आपका प्रोडक्ट आता है, आप बहुत बनाते रहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती होगी, आपको पैकेजिंग नहीं करनी आती होगी, आपने बहुत अच्छे से अच्छा सा नाम नहीं रखा होगा जो बहुत कैची हो और छोटा सा हो, आपको नाम रखना नहीं आता है, आपको जो है सपोज आपके पास पैसे नहीं है, उसको फंड्स सफिशिएंट नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता है कि हम पैसे की मदद लें कहाँ से, कर्जा लें कहाँ से, बैंक के पास जाएं या फिर हम रजिस्टर करें अपने को कहीं और, डीआईसी के पास जाएं, गवर्नमेंट कैसे हमारी मदद कर सकती है। इन सब चीजों के लिए भी अगर एक इंसान को जिसके पास प्रोडक्ट बनाने की ऑलरेडी सलाहियत, अगर इस चीज की ट्रेनिंग मिल जाए, तो व्हाट माय सजेशन इज कि उनके एनपीएस जो है वो कम हो जाएंगे, बैंक के उनके लॉसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि जो बंदा प्रोडक्ट बना लेता है लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं आती, अगर उसको मार्केटिंग सिखा दी जाए तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर उसको प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग उसके कारोबार की, उसके प्रोडक्ट की सिखा दी जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि पीपल आर डूइंग बिजनेस, उनको लेकिन अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी नहीं आती है। देर आर सो मेनी लेडीज आई हैव सीन, दे आर रनिंग, आई गो एंड टॉक टू देम, आई इंटरव्यू देम, आई फाइंड कि वो जो है प्रोडक्ट कि हाँ मैंने इसको 200 रुपए का लिया था, इसको मैंने 250 बेच दिया, 550 रुपए का फायदा हो गया। हाउ डिड यू कम आउट विद दिस ₹50? कॉस्टिंग आती ही नहीं है। आपने क्या अपने मेहनत का जोड़ा? नहीं जोड़ा। आपने अपना अपना मकान में बैठ के बिजनेस कर रही हैं, आपने उसकी कोई कॉस्ट जोड़ी? नहीं जोड़ी। आप बिजली का, नहीं बिजली का तो महीने में देते हैं, एक सूट पे कैसे डालें? सो सी देयर इज अ डिफॉल्ट इन दैट। तो अगर हम उस बंदे को इस चीज के लिए ट्रेन कर दें कि आप कॉस्टिंग कैसे करो, आप प्राइसिंग कैसे करो, आप किस मार्केट में जाओ, आप प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कैसे करो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे रजिस्टर करो, तो इस तरह से जब हम उसकी हेल्प कर देंगे, उसको ट्रेन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी सॉफ्ट स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। एंड देन देयर आर चांसेस कि उसको बिजनेस लॉसेस आगे चल के कम हो या ना हो। तो बैंक का एनपीए वाला जो पार्ट होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको भी हम शायद बचा सकते हैं, which we must try to do it. This can be done. So therefore, to minimize these NPAs, the government has been taking various steps. Let us just check out कि कैसे क्या कर रहे हैं, government क्या कर रही है. Government is providing the threefold, help and support. That is through hand-holding, funding and incentives, and incubation. So first is hand-holding. Hand-holding में it is providing all the legal support. आपको मालूम है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी फैसिलिटी दे रही है, प्रोविजन दे रही है, चाहे वो थ्रू लीगल सपोर्ट हो, थ्रू आईपीआर हो, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये हम लोग को अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं होता है। अगर जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं उनको ये नॉलेज दिलाई जाए
कि हाँ भाई ये IPR facilities है, ये exit process है, ये legal process है, which the government is providing, you know, they are extending their hand to help you out. Then there are so many schemes by the government, जिसमें कि जैसे अभी मैंने mention भी करी थी, प्रधानमंत्री योजना, then so many things, you know, महिला योजनाएं जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, तो फंडिंग्स भी दे रही है, क्रेडिट गारंटी, टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट. टैक्स एग्जेम्पशन में आता है कि आपको कोई जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को प्रमोट करना होता है, जिस नेचर ऑफ इंडस्ट्री को, बिजनेस को प्रमोट करना होता है, उसको जो है गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडेज देती है कि ठीक है हम आपसे 5 साल तक 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे. लाइक दिस दे आर प्रोवाइडिंग द फंडिंग इंसेंटिव्स एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द इंक्यूबेशन फैसिलिटीज. दैट इज, यू नो, नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, पहले भी ये होता था, पहले इतना अब रिगरस हो गया, ज्यादा एक्सपेंडेड स्केल पे गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है करना आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. That is, you know, to help the universities to establish innovation centers, incubation centers. What are incubations actually? Incubations वो होते हैं जिसमें आप जैसे इंक्यूबेशन हॉस्पिटल्स में होते हैं, छोटे बच्चा जो पैदा होता है, जो कमजोर होता है, उसको मजबूत करते हैं, उसको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, और जब एक बार मजबूत हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, बाहर नॉर्मल सिचुएशन में डाल दिया जाता है. उसी तरह से जो फ्रेशर्स जो कारोबार स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहते हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनको वो सपोर्ट दिया जाता है. जैसे मैंने बताया स्विट्जरलैंड में होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी वो है कि आपको एक डेमो फैक्ट्री का वो मशीनरी वहाँ पे लगी होगी, उस पर आप देख लीजिए, इस्तेमाल करके सीखिए कैसे प्रोडक्शन करा जाएगा, कैसे वो करा जाएगा. तो इस तरह से जो है आपका ये सारी चीजें, गवर्नमेंट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर डूइंग इट. द ओनली थिंग इज दैट हाउ in what way it is being implemented. So there are other also schemes, for example, Startup India, that is an initiative which has been taken, you know, since 2016 to support the small scale businesses. And I think ये वाला जो initiative लिया था, this has really forcefully helped to build so many startups in India. And there are unicorns also, जिसमें 1 billion के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होता है. So they are, you know, उनके regulatory compliances, meaning legal provisions आसान कर दिए जाते हैं. रजिस्ट्रेशन से लेके रनिंग ऑफ द बिजनेस में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आसान कर दी जाती है, टैक्स हॉलीडेज भी दी जाती है. सो यू नो, थ्रू दीज स्कीम्स द गवर्नमेंट हैज, यू नो, 3 एरियाज पे फोकस करती है. सिंप्लीफिकेशन, दैट इज सिंप्लीफाइंग ऑफ द प्रोसेस and hand holding, then maybe the funding supports and incentives. Third is industry academia partnership and incubation center, which we also you know, discussed just now in the previous slide. Then there are so many schemes, as I said, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Credit Guarantee Trust Fund for micro and small enterprises. There is financial support for MSMEs in Z certification schemes, CLC, SS, and Design Clinic for Design Expertise, etc. ये सारी schemes हैं. Now, again, I will be saying, as I've been saying, कि ये schemes होने के बावजूद और इतने वो सब होने की facilities देने के बावजूद, why is it that the entrepreneurship is not getting a push for that? So I will say, first of all, you know, the higher education is still, we need more revolution in this. We need to bring in more revolution. We need to you know, at the court, एक court जैसे कहा जाता है, tap when they are young. जब immature और young होते हैं, तभी अगर आप उनको train करना और उनकी counseling करना, उनको motivate करना शुरू कर दें, तो I think more and more students can be pushed towards entrepreneurship. Here मैंने कई solution आपको अभी अपनी तरफ से दिए हैं कि practical paper पढ़ाए जाने चाहिए, practically ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, last semester में choice दे देना चाहिए अगर कोई कारोबार करना चाहे, maybe इस तरह से. और दूसरा, उनको training programs खूब कराने चाहिए. For example, one of the training program which we are running at Aligarh Muslim University, I am running that program. It is called Sure Workshop. In Sure Workshop, what do? It is a 3 months long workshop. इसमें हम
एंटरप्रेन्योर्स जो कारोबार करना चाहते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जिनको कॉमर्स की और बिजनेस की ABCD नहीं पता है, या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड के, बट दे ऑल हैव द they have the potential to produce the goods and services. वो चीजें बना रहे हैं, बहुत अच्छा हुनरमंद है, लेकिन कारोबार की सॉफ्ट स्किल नहीं है। तो वो सॉफ्ट स्किल हम अपनी वर्कशॉप में 3 महीने उनको हर एरिया को सिखाते हैं, हर एरिया को कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, costing, pricing. We also teach them, that is legal provisions, how to get yourself registered. वहाँ पे हम लोग उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर भी कराते हैं. Then marketing में भी help them in registering on Flipkart, Amazon, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस रहता है. All these things have to be, we have to incorporate them more and more in all the university system. That is, कैसे हम इनको इस सॉफ्ट स्किल को स्ट्रेंथन करें. प्रोडक्ट तो वो बनाना अपने सब्जेक्ट के थ्रू सीख ही रहे हैं, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स में हो, किसी भी एरिया में हो, डोमेन में हो, उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में तो जानकारी है, लेकिन उस प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट तक कैसे लाना है, कैसे बेचना है, वो इस तरह की वर्कशॉप हेल्प करती है, उनको सिखाती है, विच we are also running, to produce more and more entrepreneurs by helping them to create this, develop this, generate this soft skill. ठीक है. एंड देन एक और बहुत बड़ी कमी है कि जो स्कूल लेवल पे हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पेपर पढ़ाया जाता है, बट आई ऑलवेज से एवरीथिंग शुड बी डन at in a practical way, so that they are, for example, if you remember, आप लोग के स्कूल में भी होता होगा, हमारे भी स्कूल में होता था, फेट ऑर्गेनाइज करी जाती थी, और हम बच्चों से बोला जाता था जब हम लोग पढ़ते थे कि आप जो है अपने अपने जो भी बच्चे काउंटर लगाना चाहे, कुछ बेचना चाहे, गेम्स खिलवाना चाहे, एंड देन यू अर्न मनी. That was a very excellent, exercise which taught students how to do a business, how to start a business, and as well as how to face competition. Because I remember जितने लोग स्टॉल लगाते थे तो कंपटीशन ये रहता था दिमाग में, हम पैसे ज्यादा कमा लें उससे. And this is very, very positive. This should be encouraged. So I'm not saying कि हर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बनेगा. दुनिया का हर आदमी एक ही चीज नहीं बन सकता है. हर आदमी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंजीनियर नहीं बन सकता. बट सब कुछ बनने के बाद जब खाली बचता है तो ऑप्शंस हमारे पास और होने चाहिए, बच्चों को ऑप्शंस और देना चाहिए, so that by the time they come in class 10 they know they should be, कॉमर्स भी अगर बच्चे को दिलाया जाता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठाई जाती है कि अब तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तुम्हें बहुत अच्छी कुछ अकाउंटिंग बैकग्राउंड में, या कंपनी सेक्रेटरी बनना है, CS बनना है, या फिर आप ICWA कर लीजिए. तो कॉमर्स से रिलेटेड जो जॉब एरियाज है ना, उसी पे फोकस ज्यादा कराया जाता है. Why can't, the things can be more practical, कि नहीं, आप कोई सा कॉमर्स में हो या किसी भी चीज में हो, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अगर आपको बनानी आती है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का भी, तो वो स्कूल लेवल से आई थिंक दैट शुड बी encouraged, and that should be inculcated among the students, so that as they grow, तो उनका माइंडसेट, एक जहन बनना शुरू होना चाहिए कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है लाइफ में, हम ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. And we have to focus, the government, maybe of our country, they need to focus more on research and development, maybe through easy financing, etc. Then we will have to create more conducive environment, that is to enhance more ease of doing business. And ease of doing business में मैं आपको बताऊं what is there. इंडिया में अभी भी अपने को रजिस्टर करने में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती हैं, और अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस टाइम तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी और इतने पेपर वर्क प्रोसीजर थे. वंस आई रेड वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच सेड दैट 180 प्रोसीजर हैं इंडियन उसमें कोई भी कारोबार को शुरू करने में, और उससे ज्यादा प्रोसीजर है अगर वो कोई बंद करना चाहे उस कारोबार को. सो इफ एनीबडी वाज मोटिवेटेड तो वो बिल्कुल खुद ही वो हो जाता था, जब तक कि आपका बहुत स्ट्रांग बेस ना हो, खुद ही वो बैठ जाता था कि नहीं भाई छोड़ो, नहीं करना है, ठीक है. सो दिस डीमोटिवेट्स अ लॉट. और इसमें मैं आपको बताऊं, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर एलन मित्तल, जो स्टील के किंग हैं
वो थे. So when he was 16, 17 years, he wanted to start as a steel business, a steel unit. और उन्होंने जब इंडिया में कोशिश, and he is an Indian, यहाँ पे कोशिश करी तो he was just, you know, he was कहीं पे कोई पेपर अटक रहा है, कोई इतना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और इतना ज्यादा, तो he just got demotivated. He just said that नहीं, हम जो है मलेशिया इंडोनेशिया में जाके प्लांट लगाते हैं. वो उधर गए, उन्हीं ने करा, एंड दे दोज इकोनॉमीज, दोज गवर्नमेंट्स वर सो प्रो एंड फ्रेंडली टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज दे न्यू कि एक कारोबार लगेगा लेकिन उसमें बहुत से लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत से लोग इससे इनकम कमाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो वो दे प्रमोटेड एवरीवन एंड स्टिल देयर पॉलिसी इज अ वेरी ओपन पॉलिसी. And he started from there and he built up a huge empire, and today maybe, you know, he's among the kings of steel and iron and steel. तो ये जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको अभी और अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले जितना नहीं है, अभी आसान हो चुका है, लेकिन दे हैव स्टिल, दे यू नो, दे नीड टू लेसन और रिड्यूस द प्रोसीजर. लेट दैट पर्सन फोकस ऑन डूइंग बिजनेस इन द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन, यू नो, कंप्लीटिंग द पेपर वर्क. पता चला उसको 6 महीने लग गया अपने को रजिस्टर कराने में, फिर उसके बाद सारी एनर्जीज उसकी खत्म हो गई. So that is there. Then maybe you must also start, you know, introducing a permanent startup visa program and overall, you know, corporate tax. ये सब चीजें तो खैर side by side हैं. So we find that it is not a difficult task. The only what we need most is a change in the mindset of the people, a change in their thought process, and it will start from the civil society. That is the parents trying to be, you know, they have to be enlightened that what are the benefits. Because see, देखिए, ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जो ले डाउन करा, सीबीएसई बोर्ड एंड वट एवर पैटर्न्स वी आर फॉलोइंग, एक्चुअली दे नीडेड क्लर्क्स फॉर देमसेल्व्स. तो उनका पेडागॉजी बिल्कुल वही था कि हाँ, आपने कितने अच्छे से आप रट के रिटेन कर सकते हो चीज को, ये रट के याद रख सकते हो, और उसके बाद आप ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हो. But I think now it is high time that we have to come out. We have been, it's not कि हम अभी तक उसी तरह से हैं, लेकिन काफी चेंज आया, लेकिन अभी और भी रिगरस, बहुत ही और ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे उस चेंज को लाने की जरूरत है. And therefore I think we should go for a start. That is, you know, I always say that एक ही चीज है जो शुरुआत करके असफल होने से बेहतर है, वो है शुरुआत ना करना. तो शुरुआत तो हो चुकी है, it has been, you know, already done, but the thing is that we need it on a बिल्कुल जो है एक revolution जो बहुत ही ज्यादा strong level पे लाने की जरूरत है, that is needed. And therefore we must go into that direction. And no doubt, I will say that yes, the government is it is trying very hard now थ्रू एजुकेशन पर, क्योंकि अब लगा उन्हें कि एजुकेशन सेगमेंट को थोड़ा रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है, तो उसमें लाया जा रहा है ये सब चेंजेस. एंड देयरफॉर, यू नो, एट हायर एजुकेशन लेवल दे नो, दे बिलीव कि यहाँ पे चेंजेस लाए जा सकते हैं थ्रू transforming the higher education into a platform where more and more entrepreneurs can be produced, and therefore we can train more and more entrepreneurs to, before they move out, you know, ये अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज का थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से पहले उनको इस तरह से कराया जा सकता है. So that is all what I wanted to share with you. I hope you could link and correlate it with what is actually happening around you, and this is what is required, what is needed in you know, in our country to bring a fast change. That is, we have to produce more and more job givers instead of job seekers. That is all. Thank you so much. And if you want to ask something, the floor is open for you. Anybody wants to discuss or wants to share something, you're most welcome. Yes, please.
Hello, ma'am. Yes, please. This is Amod. Yes, Uh, Mr. Amod. yes, ma'am. I just want to know that what scheme or organization that can help to starting a entrepreneurship or a firm uh, Means means to are you asking for a college level? no after college. Hmm. Means any individual who wants to start a business. So government help or government schemes or uh, some kind of help so they can um, one individual can start her office or her firm or entrepreneurship so, Hmm. or ones who expertise in a specific work. Actually, see, you must have heard about DIC. Every, city, every district has one district industry center. So, if anybody wants to or is interested in starting a business, or he wants to become an entrepreneur, then and he wants to know about all the government scheme, the best place to go is district industry center. You go to their office and they have all the details. क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि मैं जो वर्कशॉप कराती हूँ उसमें मैं एक सेशन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का जरूर रखवाती हूँ. वहाँ के जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट मैनेजर ये लोग आते हैं and they educate the people there, my participant की गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम होती है. देखिए अखबारों में भी निकलता रहता है, सब रहता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हम लोगों को जानकारी नहीं होती है उस चीज की. वी लैक दैट अवेयरनेस. अच्छा, कुछ ना कुछ नई पॉलिसी आ रही है, अपडेट कैसे करें? तो डीआईसी की टीम आती है, दे अपडेट एवरीथिंग दैट इज. हाँ भाई, इतने जो है आप ये अवेलेबल हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट फ्री लोन है यहाँ पे, इतना अवेलेबल है, इतने लाख का बजट अवेलेबल है. तो वो, और वो बैंक से भी डीआईसी जो है, फिर बैंक स्पेशली कैनरा बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक इज देयर बैंक फॉर एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल, जिसको ये सबसे आगे रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये डीआईसी सबसे बेस्ट प्लेस है जहां पे आप जाके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं सारी स्कीम्स के बारे में. फिर आप अपने को रजिस्टर भी करा सकते हैं. जैसे हमारी वर्कशॉप में कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिनको जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड पेंटिंग एक पार्टिसिपेंट थी, शी वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. सो व्हाट हैपेंड हियर दैट वो, उसको जब डीआईसी भेजा गया या डीआईसी की टीम आई थी, जब उन्होंने उनको एजुकेट करा, तो शी वेंट एंड शी गॉट हरसेल्फ रजिस्टर्ड. वो पेंटिंग वगैरह बनाती है एंड कोचिंग खुलवा दिया है उसका. तो इस प्रोग्राम के बाद हम उसने खोला है अपना. तो व्हाट हैपेंड, देयर इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट कि जो लोग रजिस्टर उस स्कीम में कराते हैं, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में एग्जीबिशंस लगती हैं, तो वो उनको इन मेंबर्स को भेजते हैं जो लोग रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं उनके, और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है हर जगह जाके अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी पेंटिंग्स को, अपने कोई भी प्रोडक्ट भी हो सकता है उसका भी करते हैं, तो वहां पे उनको स्टॉल मिल जाता है. और अगर स्टॉल के किराया ज्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट, वो जो है गवर्नमेंट की उस स्कीम के तहत उनको लोन भी मिल जाता है किराए के लिए. और जब वो पूरे महीना या जितने दिन भी एग्जीबिशन लगती है, जब वो पैसा उतना कमा लेते हैं वहां से, तो उसके बाद फिर वो जो है क्या करते हैं कि इनको रिफंड कर देते हैं, और इंटरेस्ट फ्री होता है यूजुअली, या बहुत नॉमिनल सब होता है, वो देके एंड देन दे कंटिन्यू. तो इस तरह से बहुत सारी स्कीमें जो नहीं पता होती हैं, तो डीआईसी ऑफिस जाके वहां पे पूरी जानकारी हासिल आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं. क्योंकि वहां से आपको दिशा ये मिल जाएगी कि आपको जाना किस तरफ है, कहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, बैंक कौन सी आपको हेल्प करेगा, कौन सा आपको कहाँ पे ज्यादा आसानी से ये काम हो जाएगा. तो दे गिव हेल्प. और उनके अपने डीआईसी जो बहुत सारे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराता है, जिसमें वो ट्रेन करता है प्रोडक्ट मेकिंग में भी. यूजुअली सब ज्यादातर मैंने देखा है कि उनकी जो रूरल इंडस्ट्री है, रूरल में, जैसे फॉर एग्जांपल दिस फार्मिंग में,
इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका कारोबार अगर करना चाहें आप तो वो उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। इनका जैसे अलीगढ़ में वी हैव आरसीटी, उनका सेंटर है इनका डीआईसी वालों का, जिसमें ये अपना सीएसआर का पैसा लगाते हैं इन लोगों को। और इसी तरह से रूरल इलाके के जो लोग होते हैं उधर के, वहां पे उनको कोई ब्यूटी पार्लर का खोलना है तो ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं, बेकरी का कोर्स कराते हैं। तो यू नो दे आर हेल्पिंग यू नॉट ओनली they help you in product development, but they are also helping in financial support also. So I think I, I hope you wanted to know this only, Amodji. Yes, 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 ma'am. Thank you. That this district industry center is the best office to go to approach to know all these things. Okay, ma'am. Thank you. Yes, somebody else? So I think we can bring it a close. We can call it a close. And thank you so much for your patience, listening and cooperating. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. ভুল করে ফিল আপ করুন না, আইতেছি এখন। চেক করেন খালি, আইতেছি। ওই নুরুল স্যারের দিকে আইতেছি। ওই লিঙ্ক তো দিয়া না, এতে লই বন্ধ করছে তো। ফার্স্ট ক্লাস শেষ হইল তো। হ্যাঁ, কোড চলে আছে, নাই ক্লোজ করছে। এই অ্যাটেন্ডেন্স লিংক দিলে Yeah, we are waiting for link. আপনারটা আপনার একটু স্লো আছে, আগা বাসা আছে। কি এইটো নহয়, বাই দ্য লেকচার হচ্ছে নাও আই এম ক্লোজিং দ্য মাই স্পেস, এরকম করে কইলো তো। ক্লোজ করলো। Is there any link for attendance? আমার হাতে কি দুই সিস্টেমে চলছে নাকি? মাঝে মধ্যে লিঙ্কটা কপি করে আমরা দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে। এনে যেটি এটি একটাই আমাকে এনে এনে ক্লোজ করছে। ব্রেক লিঙ্ক দিছে নাকি? অ্যাটেন্ডেন্স দিছে না নাই?
কেউ কিন্তু দিয়াই নাই, লিঙ্ক আ নাই, একটু কপি করে দিয়েছে নহয় এটাই ইয়াতে কি আহা নাই, এতে সবে বিচারি আছে, এতে সবে বিচারি আছে ইয়াত একটু কাটি নি দিব স্যার। আপনি গুয়াহাটির কি আলিগড়? হ্যাঁ আমার না সবে চাইতেছে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আলিগড় কখন না থাকবে দেখলি Please wait second session. Which second? Info. इन्हें ठगे लगे अटेंडेंस दिस ना মানে আগে করবে রে আগে আগে ক্লিক করছি দিতে হয়ে গেল হ্যাঁ ও ফেল আছে একটা না মানুষ বেলে গেলে কাছে গেলে রিসার্চ পারসন আবারও সেই ঘোরাই গেছে আবারও সেই ঘোরাই গেছে কে সাবমিট করে নেয় সাবমিট করা হলে ওটা ফিল আপ করা হলে যেটা ফিল আপ করা হলে না ওখানে কোনো লিঙ্ক দেওয়া যাবো না হবে আমি ঠিক গেলাম করলাম যে খালি ই করুন এই যে
তাহলে থাকেন আগে ফিডব্যাক দিব সেই আহে কি রে বসে তাহলে এত দুর্বল তো ভাবিনি লিঙ্ক দিতে আমি নাই এই শালা আমার কি কোনো গুণা না আমি ছিলাম তো নিয়ে আমি এত এত করে কি বেশি কিছু কেমন তো ওইটাই তো ওরা এই বস্তুটা আমি পাইলাম না থেকে ওই না জিনিস এটা পাইলো না হবে একটা সাফা জায়গায় লিখবো সাফা জায়গায় দুনিয়ার লেত্রা পেজাম কোনটা থেকে কোনটা হইতে পারেন দিশা হয় অন্যান্য বহুত কিছু আছে এর মধ্যে কি সেরা এ বইয়ের লিখতে করছে করছে ফিল আপ করে শেষ হয়ে গেছে ওই নাম্বারটা মেয়েরা ফিল আপ করলে হয়ে যায় সরি আবার ঘুরে এখানে কাম এখানে করে মোবাইলের কাম নাহলে চলবো না দুর্বল হলে চলবো না হম एक नौ ठीक है তিরিশ ও হ্যাঁ 10 মিনিট এটা কারণ যাবো নাকি লাগে তো মা বন্ধ হওয়ার প্রোগ্রাম হয়ে গেছে তাদের দোকান না দাদা কিমান আছে আমার 43 আছে মোর অলপ আগবাঢ়িলে মোক দিবা আকৌ হা মত অন্য হয়ে যায় ট্রেনিং কৰি তাদের এজন সাদা আলাদা কি করলাম নাখাটে তাদের সাদা আলাদা দিব না I hear
আৰু এডভান্স হ'ব লাগিব দেই আনিলে। টাইটেল কিবা দিছিল নতুন দেব না তার মধ্যে এরকম পেপার যদি দিই নেই আপনি তোর পেপার দিতে আসুন না পেপার দিলি তাহলে ওই আপনি পয়সা বেশি দেন লাগবো আপনি খালি অ্যাটেন্ড করবেন ফিল আপ করে দিন আমি পাঠাই দিই তিরিশ ছয় বাইশ No. এক তিরিশ এটা আনসার এটা এটা এখন দিলেন না আগে রেসাল এটা এমনি আসল এটা অলরেডি ওই রেসে ফিলাম স্ক্রিনশট ওটা আগে আগে যেন দিছিলাম ওটা আছে যায় না বাকি অপশন চেকআপ করে দাও ফিল আপ হইছে ওটা বাকি নাই বানান বানান যাচ্ছে বলছিল না তো নামটা ইউ আর ফুড বান ইউ আর ডি এ এন এল এবিডেল দিছেন হ্যাঁ আসলে অল্টারনেট কন্টাক্ট আবার অল্টারনেট না এটাই দেন আপনি ও হোয়াটসঅ্যাপ মোবাইল নাম্বার এটাই অল্টারনেট নাম্বার এটাই আমার মেইন নাম্বার এদের মধ্যে দিলে না পেতে
মেল ঠিক আছে A59442227@gmail.com হুম। আমার দেবেন না education name of the college something like হুম। that. Appearance. অনলি পার্টিসিপেট ডেট টাইম Time. ETN number. নাম্বার Screenshot. yes Yes. Yes. সাবমিট তারা কিছু জিনিস সব শুদ্ধ সত্য গ্যারান্টি ওকে গ্যারান্টি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দিলাম হুম। প্রথম কালি করে না বিসমিল্লাহ কইরা নামাই দিলাম জয় দাম এটা স্ক্রিনশট দেন এনে হয়ে গেল তো এডিট ইওর রেসপন্স যাবো গা তাড়াতাড়ি মৌসুম করে পিক্সেলে যে আগুন ভালো তো আছে বাহ জোড়া জোড়া স্যার কি আগুন কিছু করবো না এটা ভয় আছে নাকি ওই দেখুন এই শালা পারান না কেন ইসলাম বাস শুরু করা হয়ে যায় বাজে বস্তুগুলো গায়ে আর এই শুয়ার বাচ্চারা এগুলা বাজে বস্তু অনেক নামে মেলাতে বলছি তাই না দেখি না দেখি না হয়ে গেছে গা তার মধ্যে কি আছে তো আছে এই না আপনার খালি